they need to find a right college or right university. Students में usually ये question ज़्यादा रहता है कि कितना time मिलेगा once I get the offer letter. There are some cases where students were sent back from the airport. सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैनेडियन स्टूडेंट वीजा जो है उसके डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में और उससे एसोसिएटेड कॉस्ट के बारे में। बट उससे पहले अगर श्रेया आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना और गोकुल इंटरनेशनल का देना चाहे तो। Hi everyone, this is Shreya Chauhan. I'm Managing Director of Gokul International Nadia, and we are into the student visa business since last 22 years, and we are expert for Canada student visa. तो बेसिकली मेरे वीजा भी इन लोगों ने ही कराए थे, इवन तो मेरे को फ्यू बैकलॉग्स भी थी, बट उसके बाद भी इन्होंने मेरा अप्रूवल लाने में मेरी काफी हेल्प करी थी। सो अगर किसी को भी कंसल्टेंसी करानी है तो दे आल्सो प्रोवाइड लाइक ऑनलाइन कंसल्टेंसी। यू डोंट हैव टू गो टू देयर ऑफिस और एनीवेयर। इवन दो मैं भी दूर ही रहता था अहमदाबाद में, सो मैं भी सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जाती है आज, तो आपको जाने की जरूरत नहीं रहती। सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका जो इंस्टाग्राम पेज है और उनका जो ईमेल आईडी है वो डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा नाम लेके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो अब बात करते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा आना चाहते हैं तो आपको वीजा के लिए आपको कितने स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहेगी। सो श्रेया, सबसे पहला क्या स्टेप रहता है जब भी कोई स्टूडेंट प्लान करता है कनाडा आने का? So first step जो रहेगा उसमें you need to prepare for any of the English test. Canada के लिए there are 3 tests which are valid. First one is your IELTS. IELTS में आपको academic IELTS के लिए preparation करनी रहती है. Second one is your PT and the third one is the TOEFL. So अगर आप Canada के लिए planning कर रहे हो तो you need to appear for any of these 3 tests and आपको उसके band score according to your program you need to have a band score. Right, so first step जो रहेगा उसमें you need to have your bands handy. और जहां तक मेरे को पता है, आई गेस IELTS के 15,000 समथिंग होते हैं, राइट? अराउंड हाल ही की डेट में जो Same goes for PT. ओके। और व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? सपोज अगर किसी स्टूडेंट ने IELTS दे दिया और उसके 6.5 या 7 बैंड आ चुके हैं काफी मेहनत करने के बाद, उसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है? नेक्स्ट स्टेप जो रहता है उसमें यू नीड टू अप्लाई फॉर द एडमिशन, और एडमिशन के लिए नीड टू फाइंड अ राइट कॉलेज और राइट यूनिवर्सिटी, और आपका जो स्कोर आता है वो और आपका जो नेक्स्ट इंटेक जो है वो दोनों मैच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जैसे अभी एग्जाम दे दिए राइट स्टूडेंट ने, नाउ करंट मंथ इज जून, बट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इंटेक दे आर नॉट गोइंग टू गेट सितंबर। अगर वो सितंबर टारगेट कर रहे हैं तो वो एडमिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सितंबर इज ऑलरेडी फुल नाउ, right? So right. even if I talk about January intake, so January is again 80 to 85% colleges are already full for the seats. So आपको ये जब आप IELTS प्रिपेयर कर रहे हो ना बेसिकली, तब you need to keep in your head कि आप कौन सा इंटेक टारगेट कर रहे हो। तो आपकी प्रिपरेशन जो है शायद आप 3 या 4 महीना प्लान आउट करके बैठे हो, तो आपको उसको जल्दी बताना पड़ेगा, राइट? और आपको कवर अप करके उसको प्रॉब्ली 2 months से 2.5 months में उसको क्लियर आउट करना पड़ेगा। राइट। और ज्यादा लेट करते हैं तो फिर वो गैप भी बन जाता है, राइट? कोर्स के बाद Correct. Then you need to justify your gap, or you need to find a way to clear it up. right. Okay, so that's about the university. And what is the minimum like fees to get an offer letter from a college, or what is the current rate? Okay, so talking about like minimum fees, it would be somewhere around $75, and maximum I have heard of like $150. Again, there are some colleges and universities जो आपको फ्री में भी एप्लीकेशन करने के लिए अलाउ करते हैं. So in that case, you don't need to pay anything. So usually, majority of the college or university, I can say they charge somewhere around $100. You can take around like I guess 6,000 to 8,000 Correct. something. You can assume somewhere around 6,000, 6,500, depending upon rate of the dollar. And what's the next step after selecting a college and intake? Suppose I got an offer letter. What's the next step? So once you get your offer letter, so let me just tell you more about the time, the time frame in which you are going to get the offer letter. Like for example, if you're applying today, so there are some colleges and university which will release the offer within 24 hours. For example, Lambton. So yesterday I applied for one student. Today, before like 24 hours, I got the offer letter. Okay. Whereas for some university or colleges, it might take 1 month or 45 days or more than that. So you need to keep in your head also how much time it will take to get the offer.
And once you get the right. offer, next step is to pay your fees. So again, students में usually ये question ज्यादा रहता है कि कितना time मिलेगा once I get the offer letter, right? So usually the college will provide you like 20 days to 30 days time frame to pay the fees, और जो भी offer letter रहेगा उसके अंदर they will be providing the deadline. तो डेडलाइन में क्लियरली इट वुड बी मेंशन कि आपकी कौन सी लास्ट डेट है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट स्टूडेंट टू लास्ट डे पे ही पेमेंट करो. रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर फ्लाई वायर पेमेंट है तो वो हो जाएगा, बट अगर कोई और मीडियम या फिर कोई और मोड से आप पास ऑन कर रहे हो, फॉरेक्स से कर रहे हो या कुछ भी अदर मोड ऑफ पेमेंट है, तो इट माइट हैपन कि आपके डेडलाइन मिस हो जाए और आपका पेमेंट तब तक कॉलेज के पास ना पहुंचे. So I would suggest you to at least give a time frame of 2 to 3 days, so you will transfer your fees before your deadline, like at least Right. 3 days के पहले आपको transfer कर देनी चाहिए. And what would be the minimum fees? Like if we talk about PG diploma courses, then what is the fees that we have to pay for 1 year? Okay, if I talk about PG, which includes PG diploma, and that also includes graduate certificate programs. So for that, as of now, they have again revised. Most of the colleges have revised the fees, and it is somewhere around, you can say, $17,500. Turn out to be your 10.5 lakhs to 11 lakh rupees. And what's the next step if suppose student has paid their fees before the due date? What's the next step they need to do? Okay, so in the next step, once you have the offer itself, you can also book your medical. Like there is no like compulsion that you first need to pay the fees and then you need to do a medical. आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो. जैसे once you get the offer, आपको medical book करना रहेगा, और medical के लिए you just need offer letter. उसमें जरूर नहीं है कि फीस पेमेंट करनी है पहले से, राइट? तो मेडिकल में क्या इश्यू रहता है कि यूजुअली 10 दिन के बाद और एटलीस्ट आफ्टर 1 वीक की डेट मिलती है. तो आप अगर डिले नहीं करना चाहते तो वंस यू गेट द ऑफर लेटर, यू डायरेक्टली बुक योर मेडिकल अपॉइंटमेंट, राइट? सो फीस के साथ साथ पैरेलल भी कर सकते हो. मेडिकल अपॉइंटमेंट क्लियर करके तो आपका मेडिकल डन हो जाएगा. मेडिकल इज वैलिड फॉर 1 ईयर. ओके, सो यू नीड टू मेक श्योर. अब फॉर एग्जांपल अभी आप मेडिकल करवा रहे हो for January intake, और somehow आपका January मिस हो गया and you are going for September intake next 2023, तो आपका मेडिकल हो जाता है एक्सपायर. तो आपको उस केस में दोबारा मेडिकल करके ही जाना पड़ेगा. There are some cases where students were sent back from the airport. अगर मेडिकल एक्सपायर हो गया and they are traveling, then some cases में अगर वीजा भी आ जाता है, still they have the authority to send you back. Or what's the cost to do the medical right now? So medical cost would range from 5,000 to 9,000 depending upon in which city and which hospital you are going for the test and what all tests you are undergoing. So it ranges from 5,000 to 9,000. Okay, great. And what's the next step after doing the medical? So once you are done with your medical, once you're done with your fees payment, next step would be your GIC. You need to open a GIC account. So there are basically 3 banks which are, like, you can say, most popular. First one is your Scotiabank, second one is ICICI Bank, and third one is CIBC. Right? Out of all these, I would suggest students to go for either CIBC or Scotiabank, considering that ICICI Bank comes short of constraints or limitation in terms of the branches. So that's why what we suggest is you should go for GIC, and in GIC you need to put $10,000 to $50. It turns out to be somewhere around your 6 lakh rupees. This GIC is basically a fund which you need to put and which you need to show to the High Commission that we have a living expense for a year. Right. Right. और ये जो आप GIC में जो 10,000 डाल रहे हो वो पर मंथ आपको मिलते जाएंगे और उसमें से आप अपना एक्सपेंस निकाल सकते हो या जो अपनी फीस के लिए वो पैसे बता सकते हो. So ये पैसे कहीं जाने नहीं वाले, वो आप ही को मिलने वाले हैं. वो आपको वापस मिलने वाले हैं जी. Yeah, right. So and what's the next step after paying the GIC? So after paying GIC, now you are all ready to, your payment is done, your medical is done. So next step would be to prepare for your visa filing. And for visa filing, you need to, get all the documents like your funding documents, your extra certificates, if any, right? Your SOP, which is the main part of the visa file. Your SOP has to be way, way stronger to get the visa. Right? So you need to go have all this handy, and then next step would be to put your visa file. For visa file, they charge approximately around 15,000 Indian rupees, which is $250. And if you want to explain SOP in 1 to 2 sentence, how would you explain it?
So I would suggest SOP is a document which is, आपका पूरा कहानी, what you have done from 10th standard till your, education, probably bachelor's or something, and after even that, आपको आगे क्या करना है, कनाडा में क्या करना है, क्यों कनाडा आना है, आप वापस आओगे कि नहीं आओगे. So every information is like your whole story in SOP. तो SOP मैं काफी सारे स्टूडेंट्स का मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो ऑनलाइन उठाते हैं या फिर कोई सेंटेंसेस जैसे आर्टिकल्स में मिल गया तो उसमें से उठाते हैं. अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर योर फाइल गेट रिजेक्टेड और आपको पता भी नहीं चलेगा. योर ओन एक्सपीरियंसेस में कवर करो और अपना खुद का एसओपी बनाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस सबका अलग अलग रहता है, राइट. मेरा शायद जो एजुकेशन है, मैंने जो सर्टिफिकेशंस किए हैं, मैंने जो अचीवमेंट्स किए, माइट नॉट बी सेम विद अदर पर्सन. तो मैं सजेस्ट करूंगी सब अपना खुद इंडिविजुअल और जो भी जेन्युइन है वही इंफॉर्मेशन उसमें डालो. Right, exactly. And after visa application, we don't have to do anything, right? Or नॉट रियली एक्चुअली. पहले ऐसा था कि बायोमेट्रिक्स जो था वो पहले हो जाता था एंड देन वी यूज्ड टू पुट द वीजा फाइल. But now what is the scenario? We are putting the visa file in the next 24 to 48 hours. We are getting the biometrics later. ओके जे वो जो बायोमेट्रिक्स लेटर जो है वो आपका जीसीकी में जनरेट होगा, उसके बेसिस से आपको बायोमेट्रिक्स बुक करना रहता है. ओके और आपको बायोमेट्रिक सेंटर पे जाके यू नीड टू गिव योर फिंगरप्रिंट्स एंड एवरीथिंग एंड यू नीड टू डू योर बायोमेट्रिक्स. okay, so what's the average cost that will be around, like, total? For biometrics, Yeah, for biometric. so that depends. If you're going for normal one, so your passport pickup and your biometrics both would be done in 1800. ओके एंड इफ यू आर गोइंग फॉर प्रीमियम वन, प्रीमियम का चार्जेस जो बायोमेट्रिक्स के टाइम पे लगता है वो है 3300 रुपीज, प्लस आपको जो पासपोर्ट पिकअप है उसका 800-900 तो पे करना है. सो दैट वुड बी समवेयर अराउंड योर 4000. 3 से लेके 4000 के बीच तक हो जाएगा. हाँ, right? अगर प्रीमियम पे जो गए भी तो आप 3-4 pick up हजार, करते अगर नॉर्मल पे गए तो आपका हो जाएगा हाफ प्राइस पे. Okay. And after that, do we need to do anything, or we just have to wait No, for the after that approval? you Or need to be, have a lot of patience and you need to just wait for your decision. okay, so basically you have to be positive after filing your Correct. visa, After right? that, you have to pray. You have to be positive. You need to just follow your intuitions, basically. Okay, okay. So again, that's for just visa, for some students, we might get it within 1 month. We might get it within even a week. And for some students, it might take longer than 90 days, what they mentions to be the maximum time frame. So अभी मैं रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से जो मेन स्टेप्स थे जो बताया आपने वो. So first one, IELTS देना. Second thing, finding a good college and taking the offer letter from college. Third thing, paying fees before due date. Fourth thing is medical. Fifth, GIC. Sixth, visa application. And seventh, biometric. And eight, you have to be positive, right? So that are the main steps. और अगर मैं कॉस्ट देखूं जिस तरीके से आपने बताया तो टोटल अराउंड आई गेस 17 से 17.5 लाख समथिंग कुछ होता है. ये पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में था. अगर आप यूनिवर्सिटी या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या वो कुछ करता है सो आई गेस थोड़े 2-3 लाख समथिंग ज्यादा हो गए, राइट? करेक्ट. दैट डिपेंड्स बेसिकली. अगर उससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो शायद 2-3 लाख से भी ज्यादा फर्क हो सकता है. So like we have almost covered everything for the student visa, and I just had one more question. Do you guys provide counseling for the students who are already studying in Canada and who are planning to do another course or planning to extend their study permit by taking another course? So इसके लिए I think majority of the agents don't support. At least I talk about if Indian agents, they don't support. So basically what we offer is, जैसे हमारा कोई student है वो 1 year program लेके वहाँ पे गया है ना, he or she wants to study for another program, तो हमारे पास सारे students के contact है. Student approaches me personally कि मुझे second year के लिए ये college में program चाहिए, तो हम उनको admission free of cost करके देते हैं. Another thing is, अगर आपको study permit भी extend करना है, जैसे 1+1 करो तो you need to have study permit extended. So उसके लिए भी we help the student out कि आपको study permit के लिए भी you don't need to worry about, we'll take care of it. Okay. उसके अलावा if somebody wants like counseling on phone or counseling on video call, we can also provide that. Okay. Okay. That's great. So my students are all over India. So there are students from Mumbai, from Surat, from Ahmedabad, जिन्होंने कभी मुझे जो देखा भी नहीं है, like personally they haven't meet me, but
उनके वीजा भी लग चुके हैं, they have been in Canada. Okay, that's great. So yeah, that's everything for today's video. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, and thank you so much Shreya Chauhan for being here. And I just to conclude, I haven't been so professional with my brother yeah, in my it's fine. entire life. But anyway, we enjoyed. I hope you guys will enjoy Yeah. too. Yeah. And So lunch you'll चलते find ना? some useful information from this video, and keep supporting, keep loving, and he's doing amazing job. Thank you guys. Thank you so much. Take care. Bye bye. Bye.